See, there are two partners, Nene and Kane, which are there in the business, and you have to make the trial balance. This is trial balance, and you have to make the trading account, profit and loss account, and balance sheet. Okay, we will see the trial balance items now. First is capital. Second is sundry debtors. Sundry debtors will come in the balance sheet asset side as they are the debtors of the company. Next is sundry creditors. They are the creditors. The company have to pay to the creditors. So we are liable to that creditors. So it will come in the balance sheet liability side. Next is rent. खर्चा है कंपनी का एंड सी दिस इज 10 months ब्रैकेट में है तो इट इज द हिडन एडजस्टमेंट ओके ये जो रेंट दी गई है 10,000 वो 10 months की है ओके this rent which is given is of the 10 months we have to calculate of 2 more months okay next is stock on 1st April 2018 so this is the opening stock. Next is premises. It is the asset of the company, so it will come in the balance sheet asset side. Next is the salaries. Salaries are the expenses of the company, so it will come in the office. It is related to office. Okay, so it will come in the profit and loss debit side. Discount. See discount कहाँ पे है? Debit side. Okay, debit में लिखा हुआ है. So sorry here. Debit भी है and credit भी है. So accordingly, we will put debit wala in profit and loss debit side and credit wala in profit and loss credit side. Okay. Motor vehicle is the asset, so it will come in balance sheet asset side. Sales जो है हम लोग कहाँ पे लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में उसको हम लोग सेल्स रिटर्न होगा यहाँ पे यस सेल्स रिटर्न इज देयर सी सेल्स रिटर्न है यहाँ पे तो हम लोग इसको लेस करेंगे सेल्स में से देन परचेसेस हैं परचेस रिटर्न्स लेस करेंगे और लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में wages it is related to the expense of the factory so it will come in the trading account debit side. Next is office expenses office related खर्चा है तो profit and loss के debit side में आएगा. बैंक OD again खर्चा है. See यहाँ पे आपको new items दिए हुए हैं trial balance में. First is provident fund investment. See next is provident fund contribution. Third is provident fund and यहाँ पे है fourth interest on provident fund. We will see कहाँ पे जाएगा. Cash in hand and cash at bank will come at the asset side. Okay. Drawings हम लोग लेस करेंगे कैपिटल में से and again bad debts and RDD ये वाले हैं. ठीक है. See bad debts and RDD ये कौन से हैं? Old वाले जो ट्रायल बैलेंस में दिए होते हैं. The RDD and bad debts which are given in the trial balance are considered as the old ones. Okay. Next we will move हमारे adjustments पे. Okay. First adjustment is of closing stock. Second is outstanding wages and salaries. We know the rule. We will take the adjustment as per the expense. Okay, in the trial balance. सबको याद है ना ये rule? Next is depreciate motor vehicle. It is the asset. उसको depreciate करना है. Write off bad debts. These are the new ones. Bad debts and RDD. The ones which are given in the adjustment. These are considered as new one. I hope you know all the formulas to calculate the bad debts. Kane withdrew goods of 6,000. If you noted that these are given two times. Okay, Kane का drawing इधर भी है and in the trial balance also. See यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में भी केन का ड्राइंग है. ओके जस्ट वेट अ सेकेंड. सबको इतना समझा? हम लोग आगे चल के इनको रिस्पेक्टिव इसमें अकाउंट्स में पुट करेंगे. ओके वी विल पुट दिस इन देयर रिस्पेक्टिव अकाउंट आफ्टर डिडक्ट द न्यू bad debts and new RDD which are given in the adjustment that we have to deduct from the sundry debtors. Okay, I hope you all know the formula. Yes. Next is sales. Sales again it will come in trading account credit side.
लेस रिटर्न्स करके लिखेंगे यहाँ पे. ओके, सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, रिटर्न्स लेस करके. यस, करेक्ट मनस्वी, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट गिवन? परचेसेस. परचेसेस कहाँ पे आएगा? यस, वेयर इट विल कम, इन विच अकाउंट? Purchases will come in trading account debit side. Correct. Trading account के debit side में purchases, and we will less the returns from it, 3,500. Ultimately answer will be 6,37,000. Okay, next is wages. Wages, where it will come in which column, which account? Trading account debit side. Yes, correct. Trading account के debit side wages लिखेंगे. Outstanding wages है यहाँ पे. Again we will add this outstanding wages, and this outstanding wages will come in the balance sheet liability side. See, wages 3,000. Okay, next is office expenses. Where it will come, in which account? Office expenses, office related expenses, where it will come? Yes, correct. Profit and loss debit side. Okay, next, bank OD. Bank OD, it is the liability of the business, so it will come in the liability side. Okay, bank overdraft liability side. Yes, correct. Next, returns we have already deducted. See, provident fund investment, जब हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, so it is the investment, भले ही provident fund क्यों नहीं हो, investment है, so it will come in the balance sheet asset side. Okay, this is new provident fund investment. सी, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट हम लोग कहाँ पे लिखेंगे? एसेट साइड में. ओके, अब नेक्स्ट है हमारा, जस्ट वेट अ सेकेंड, नेक्स्ट है हमारा प्रोविडेंट कैश इन हैंड. इट विल कम इन द एसेट साइड. प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, employer is going to contribute in the provident fund, so it is the expense. So ये expense है, तो ये कहाँ पे आएगा? provident fund contribution, profit and loss के debit side. See, profit and loss debit side, provident fund contribution. Okay, next है हमारा provident fund. Only provident fund, सिर्फ provident fund बोला है. ठीक है, just wait a second. Only provident fund बोला है, तो हम लोग इसको कहाँ पे लिखेंगे? Asset side. Okay, just wait a second. ना, यहाँ पे प्रोविडेंट फंड जो था ना, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, उसमें से हम लोग ऐड करेंगे. प्रोविडेंट फंड इज टू बी रिटर्न इन द बैलेंस शीट एसेट साइड, प्लस वी विल ऐड दिस इंटरेस्ट जो हम लोग को देना है. इट इज द लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस. प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट होगा वो भी हम लोग को देना है, सो इट इज द लाइबिलिटी ऑफ द business, so we will add those and we will write by adding 3,22,000. okay, next है हमारा ड्रॉइंग्स. ड्रॉइंग्स हम लोग कहाँ पे लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट में से लेस करेंगे. बैड डेट वी हैव ऑलरेडी रिटन, आरडीडी वी हैव ऑलरेडी डन. ओके, सो यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट हियर. और यहाँ पे हम लोग गुड्स विड्रॉन बाय केन फॉर पर्सनल यूज, जो हम लोग का यहाँ पे एडजस्टमेंट था, वो भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड. सी, गुड्स जा रहा है हम लोग का, तो गुड्स विड्रॉन बाय केन फॉर पर्सनल यूज, दिस विल आल्सो कम इन द ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. okay, so in this chapter what you are going to learn accounts for non-profiting concern, that there are two types of organizations, that is non-profit organization and profit organization. Non-profit organization, their aim is to give service, their aim is to give the support to the members of the society, and whereas profit organization, they have the aim of earning the profit. okay, in the profit organizations, they do not work for the society, and the non-profit organizations, they work for the sports club, charitable hospitals, schools, colleges, trust, social welfare organizations. We have already seen that they are their difference. okay, next, you have seen that in profit organization, you make profit and loss account, but in non-profit organization, you will not make non-profit and loss account. Instead, you will make income and expenditure account and receipts and payment account. okay, in the next lecture we will start with the receipts and payments account.